A very warm good afternoon to all the dignitaries, deans, directors, faculty members, and participants. On this occasion of Constitution Day, we all gather here to reflect upon and celebrate the guiding principles that shape the very foundation of our democratic nation. The 26th of November holds a special place in our hearts as we honor the adoption of the Indian Constitution, a remarkable document that epitomizes the essence of justice, liberty, equality, and fraternity. Today, we all are gathered here to delve into the constitutional values and fundamental principles that are actually the bedrock of our great nation. Our constitution is not just a legal document, it is a living, breathing embodiment of the aspirations and dreams of millions and trillions who yearned for a just and equitable society. At the heart of our constitution lies a set of values that not only define the character of our nation, but it also inspires us to strive for a better future. Justice, the first and foremost of these values, symbolizes the fair and impartial treatment of all citizens. It is a call to eradicate discrimination, ensure that every individual, regardless of his background, enjoys the fruit of just society. Liberty, which is the second pillar, underscores the importance of personal freedom and autonomy. It empowers us to think, speak, and act freely within the bounds of a lawful society. Equality, the third principle, is actually the promise. It is the value that promises that every citizen will be treated with equal consideration and respect under the law. And fraternity, the fourth one and the final value, embodies the spirit of unity and brotherhood. It calls upon us to rise above our differences and work collectively towards the common good. So the Constitution not only imparts these values, but it also lays down certain fundamental principles that guide us, that actually lays a path for our governance and the functioning of our institutions. Separation of powers ensures a system of checks and balances. On the other hand, federalism recognizes the importance of decentralization. Directive principles of state policy, though they are not enforceable in the courts, are actually moral compass that directs the state to strive for a just and egalitarian society. So they remind us of our duty to secure socio-economic justice and ensure the well-being of our citizens. The rule of law, on the other hand, is actually the cornerstone that ensures that no one, irrespective of their position, is above the law. So as we celebrate this day, as we celebrate this Constitution Day, it is actually imperative upon us that we recognize our responsibilities as citizens of this great nation. We are not merely the recipients of the rights enshrined therein. We are actually the custodians of this Constitution. So it is our duty to uphold the values it represents, to defend the principles it lays down, and to contribute actively to the progress and well-being of our society. So with these words, I request Professor L.M. Tiwari, a dynamic personality from the Department of Botany, to commence our webinar with the welcome address. Your words have the power to set the tone for this event, and we eagerly await for your insightful remarks. Professor Tiwari. थैंक यू डॉक्टर दीपाक्षी एंड सबसे पहले तो मैं सभी को आज संविधान दिवस की बधाई देना चाहूँगा कि संविधान है तो तभी हम सब लोग भी हैं. तो लेट्स वी स्टार्ट विद द वेलकमिंग ऑफ आवर गेस्ट. सो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thoughts,
expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of all individuals and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, 26th November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. This Constitution declare India a sovereign, socialist, secular, and democratic republic to assure its citizen justice, equality, and liberty, and endeavors to promote fraternity. So ये जो संविधान की ये पंक्तियां हैं, हम सबको बराबरी का और न्याय का अधिकार देती हैं, हमारे जीवन को जीवन के रूप में सार्थक करने का प्रयास करती हैं। ये संविधान की ये पंक्तियां आज के इस महत्वपूर्ण वेबिनार में उपस्थित हमारे पूज्य और हमारे परम आदरणीय प्रोफेसर केसी जोशी जी, पूर्व कुलपति कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, मैं उनका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे साथ पूर्व डीन फैकल्टी ऑफ लॉ हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस.डी. शर्मा साहब, जो वक्त कहूँगा कि लब्ध प्रतिष्ठ भी हैं। जब उनके हम व्याख्यान सुनेंगे इस बात का बिल्कुल निश्चित रूप से प्रमाण भी मिलेगा। उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही हमारे साथ इस कार्यक्रम को जिन्होंने हम सबको एक सूत्र में जोड़ने का काम किया, हेड डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर गीता तिवारी, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं, और उनके साथ हमारे विद्यार्थी जिनमें आदित्य खोलिया, एडवोकेट गोविंद यादव, अनादि चतुर्वेदी, अंकित सैनी, अनुरिता भट्ट, आन्या खान, अरुण मंडल, अविकिल बिस्ट, बसंती गिरी, दीपक रौतेला, और साथ में दिनेश सिंह बगारी, और साथ में डॉक्टर सुरेश पांडे, डॉक्टर एम.एस. गुसाई, ईशा टांग, गार्गी कपूर, गरिमा फर्तियाल, गौरवी जोशी, हर्षित शर्मा, हिमानी बिस्ट, जानकी पलड़िया, ज्योति भारती, कैलाश चंद्र जोशी, कविता अग्रवाल, काव्या, किरण कुकरेती, कुसुम पांडे, लवली पवार, माही झा, मनीषा आर्या, मनोज बिस्ट, मोहित शर्मा, डॉक्टर नीलू लोधियाल, प्रोफेसर नीता बोरा शर्मा जो हमारी निदेशिका हैं डीओसी परिसर की, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। निष्ठा जोशी जी, पद्मा जी, प्रतिभा सेलेन, और साथ में पूनम मजुमदार, रुद्रा गौतम, सीमा शर्मा एडवोकेट, शाम्वी सिंह, शशि प्रभा, शिल्पी बाघेल, सृष्टि सुनैया, सुरजीत सिंह, स्वाति मित्तल, तनुजा आर्या, ठाकुर रुद्र प्रताप, विकास रंजन त्रिपाठी, विनीत उपाध्याय, विशाल शर्मा, यशिता करगेती, योगेश्वर गनोला और कार्तिक लोहनी का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जब हम 26 नवंबर के दिन सब लोग एकत्र हुए हैं, और ये 26 नवंबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही संविधान तैयार हुआ, जिसको लिखने में बहुत सारा वक्त लगा, और 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान लागू किया गया। इसलिए 26 नवंबर 1949 का वो दिन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान तैयार हुआ। संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रत्येक नागरिक में सम्मान की भावना। 26 जनवरी 1930 को क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसीलिए 26 जनवरी 1950 का दिन वो सुनिश्चित किया गया जब भारत को एक संवैधानिक राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली और भारत का संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी को जो 26 नवंबर है, उस दिन न केवल हम संविधान दिवस मनाते हैं बल्कि राष्ट्रीय कानून दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और इस संविधान को हमने जो अन्य देशों की जो खासियतें थी, जो विशेषताएं थी, उनको भी हमने इस संविधान में लिया है। यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधान को इस पर उल्लेखित के साथ उनके संविधान की जो महत्वपूर्ण और अच्छी बातें थी उसका को इस संविधान में लिया गया है। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार, उनके कर्तव्य, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियां सहित जो अन्य मंत्री हैं, जो अन्य अधिकारी हैं, उनके संवैधानिक जो शक्तियां हैं, उसका वर्णन इस भारतीय संविधान में मिलता है, ताकि भारत की जो आर्थिक असमानता है उसको, उसकी जो खाई है उसको भरा जा सके।
भारत के संविधान को बनने में बहुत सारी मेहनत हमारे जो स्वतंत्रता से जुड़े हुए और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने अपनी भूमिका सुनिश्चित की, उनकी एक महत्वपूर्ण कमेटी बनाई गई। 22 कमेटियां गठित हुई, जिसमें 8 कमेटियां मुख्य रूप से हुई, जिनमें ड्राफ्टिंग कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट शामिल है। लेकिन एक लंबा सफर इस संविधान को बनने में लगा। 9 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका फाउंडेशन रखा गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसका प्रेसिडेंट और एच मुखर्जी साहब को इसका वाइस चेयरमैन और BN राव साहब को इसका लीगल सलाहकार बनाया गया। 389 मेंबर्स के साथ जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए आफ्टर द इंडिपेंडेंस, 299 सदस्य इसमें बचे जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया। 13 दिसंबर 1946 को कई ऑब्जेक्शंस इसमें रिजोल्व किए गए और 22 जुलाई 1947 का वो महत्वपूर्ण दिवस जो हमारी आन बान और शान का प्रतीक है तिरंगा, उसे अडॉप्ट किया गया। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी BR अंबेडकर जी के नेतृत्व में और 6 मेंबर्स और भी इसके साथ शामिल किए गए, जिनमें KM मुंशी साहब, सदाउल्ला साहब, अय्यर साहब, GS अयंगर साहब, MM राव साहब और T कृष्णमाचार्य जी को शामिल किया गया। 16 जुलाई 1948 के दिन HC मुखर्जी और कृष्णमाचार्य जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पास किया गया। उसका जो स्वरूप है वो आज हम सबके बीच में है। 24 जनवरी 1950 जो लास्ट मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसमें भारत का संविधान तैयार हुआ 395 आर्टिकल के साथ, 8 शेड्यूल्स के साथ और 22 पार्ट्स के साथ ये संविधान तैयार हुआ। और 26 जनवरी 1950 का वो महत्वपूर्ण दिन जब भारतीय जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू द फोर्स। और 2 साल 11 महीने 11 दिन इस पूरे संविधान को बनने में लगे, जिसमें 6.4 मिलियन रुपए का खर्चा इस पूरे जो टास्क था, जो लक्ष्य था, उसको तय करने में लगे। GV मालवंकर पहले स्पीकर बने लोकसभा के, जिन्होंने इस मर्यादा के निर्वहन में भारत की चुनी हुई सरकार के निर्माण में और उनको शपथ दिलाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित की। तो एक भारतीय संविधान जो तमाम हमारे जो दिग्गज रहे, उनके संयोग से, उनके मान से, उनके ज्ञान से ये तैयार हो सका। उस संविधान से हम सब बधे हुए हैं और उस संविधान ने हमको जीवन की एक शैली के साथ साथ अपने आप को सुरक्षित करने का एक अधिकार भी संविधान ने दिया है। तो आज जब हम इस महत्वपूर्ण दिवस पर है, तो पुनः कुमाऊं विश्वविद्यालय परिवार आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। मैं इससे पहले कि अपने स्पीकर साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आज हम सब के बीच में वो जब संविधान दिवस के अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम सबका निश्चित रूप से ज्ञानवर्धन भी करेंगे और हमारे जो अधिकार हैं उनके बारे में भी हम सबको बताएंगे। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर KC जोशी जी को, जो हमारे पूर्व कुलपति रहे कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल को। उनको सुनने के लिए आज हम सब लोग निश्चित रूप से लाभान्वित हैं। उनके बारे में आप सबको बताना चाहूंगा कि प्रोफेसर KC जोशी इज अ डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, having served as former vice chancellor and chairman of Juvenile Justice Board, with a pioneer achievement as first recipient of PhD in law from Kurukshetra University. His thesis focused on government liability of India. Beginning his academic journey at Kurukshetra University, he later joined Kumaun University as legal law professor, when he quickly emerged as an expert, participating in Committee for the Ministry of Law and Justice. Professor Joshi's contribution extend to numerous publications, including book on constitutional law, administrative law, and international law. His vast body of work encompasses hundreds of research papers in both international and national journals. His insight and knowledge, the highly valued, and his engagement with the student promises to enlighten them on constitutional value and fundamental principles. I welcome Professor Joshi to please share his thoughts on this important day
और आज जब हम सब लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन डे में हैं, हमारे साथ ऐसे विशेषज्ञ जिन्होंने कुमाऊं विश्वविद्यालय की सेवा भी की एज ए वाइस चांसलर के रूप में भी, और विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं के पदों के रूप में भी उन्होंने कुमाऊं विश्वविद्यालय की सेवा की। आज हम सब लोग प्रफुल्लित हैं कि प्रोफेसर केसी जोशी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। उनसे विनम्र आग्रह है कि आज के इस पुनीत अवसर पर हम सबको संबोधित करेंगे ऑनरेबल प्रोफेसर केसी जोशी सर। प्लीज सर। Thank you, Professor Tiwari. Friends, good afternoon. Congratulations on the occasion of the Constitution Day. Well, he has spoken much about me. It is the custom perhaps to equalize the persons. I retired almost 25 years back. And even my student, Professor Sharma, has also retired. You can just imagine my knowledge on the subject might be stale. Yes, I would like to listen Professor Sharma later on because he keeps update on the subject. Well, I was suddenly asked by Deepakshi, who also perhaps have been a student accidentally or otherwise, and I could not refuse to accept it. I thought I will get some knowledge about the latest development on constitutional law. Well, there is much to speak about the constitutional law. Only one aspect can be discussed for days together. You might be knowing that when the case goes to the Supreme Court, it takes long time. Case 1 on Bharti case, where they have evolved a unique doctrine. In fact, it was the need of the hour at that time because of the atrocities of the executive. And that we all know is the basic doctrine or the grand norm of the or the basic feature of the Constitution. Well, it has been applied now so indiscriminately that in most of the cases, for example, rule of law, separation of power, they are all basic structure of the Constitution. Now, separation of powers means executive, means the legislature, judiciary, and all the three organs will operate separately in their assigned spheres. But what is happening in most of the cases, the Supreme Court has virtually enacted the laws. Now, where is the separation of powers? Although they claim it is a basic feature of the Constitution. Therefore, when we talk about the values of the Constitution, the values are there, but these values are honored or distorted by the people who run the institutions. Our Constitution, for example, if you look to the source of constitutional values, well, even the person who is not expert in law, Professor Tiwari has also listed a number of things about this story of the evolution of the Constitution and most of things. Because Constitution is a subject like the food. Nobody can survive except maybe some special persons, rishis or other devotees, but most of the people generally cannot survive without food. So therefore, Constitution is like a food. Everybody should know about the Constitution, at least basic features of the Constitution. Although what is the Constitution, it is a very intricate matter, and you might be knowing that, for example, in evolving the basic structure doctrine, court took at least 2 months, and all the 13 judges, at that time there was only 13 judges of the Supreme Court, they discussed, and with the battery of lawyers throughout the country all participating, and then this judgment was delivered. Therefore, it takes a long time to follow and to find out the values. Now, the source of constitutional values, as we all are celebrating today, is the preamble of the Constitution. Now, the sanctity of the Constitution, this preamble,
when we studied interpretation of the statutes, interpretation means what is the meaning. For example, a law is made by the legislature and then the meeting. For example, there was a law enacted that in England it was a law made that the prostitutes will not solicit outstanding on the windows. That was a menace, and therefore the parliament enacted a law and said, all right, the solicitation by standing on the window is prohibited as punishable. And they said, all right, because they are persons in society, it's all right, they have prohibited you to stand on the window. Why don't you stand on the door? And then started standing on the doors. Now again arrested and prosecuted, and the defense was, look here, the mean this law says you will be punished only when you stand at the window. We are not standing at the window. The proof is that we are standing at the doors. Now it is the purpose function of the judiciary then to interpret what is the meaning. So therefore there are different principles of construction or interpretation of the law or the statute. And one principle is that what is the function of the preamble? What is the value of the preamble? Normally in the statute, the preamble is not taken seriously. It is just like a guiding principle. But so far, the preamble of the Indian Constitution is concerned, but now the Supreme Court also has held that it is a part of the enforceable part of the Constitution. But the other reason why it is so, because preamble was adopted in the same fashion as other articles of the Constitution. Therefore, it is at par with any other provision, say, for example, Article 14 of the Constitution. Therefore, the value of the preamble of the Constitution is more important. Now, these principal values, of course, there are a number of things that discussed also, and this preamble clearly spells out democracy, for example, is this India is constituted into a democratic republic. Democratic republic means where the people participate. Now, because the reason was very simple, we were a colony of the British Empire. Therefore, they said, now we are forming a state which will be governed by democracy. That is where the people will participate. And the institutions shall be responsible to the people. Because basic principle of democracy, as it theoretically is that the people, they are the ruler. The ruler are at the mercy of the people. Now, then this democracy is meant for what? For securing threefold justice for the whole of the community, social, economic, and political. Of course, liberty is also a part of, because man is all have also is this demanded or hankered for liberty. Now, liberty of thought, expression, belief, faith, and they have been listed in the preamble. Then again, if there is discrimination, then again these values cannot be realized. Therefore, they said, all right, equality is also equality of what? Equality of status and opportunity. No person shall be denied any office on the basis of either his this status. Therefore, status, equality of status and opportunity. No opportunity can be denied to any person on the ground of his caste, reason, etc. Now, these values, of course, are there. They are perennial and they are required. If you know our principle, although it is said that Pandit Nehru
But the impact on our preamble is from different sources. Particularly, what was the condition? World War, Second War, that there was the culmination. And therefore, ultimately, they said, all right, now we form an institution that is the United Nations Organization. And there they have also said that we, the people of the United Nations, determined to shape succeeding generations, etc., then to separate all these values with our constitution also incorporates. Therefore, the impact, international impact on our constitution making is also evidence, and the principle, all this preamble of the constitution also represents that thought of the time. Now, these values, well, they are there because we all say speak the truth, be honest, all to say. But how many persons really speak the truth all the time or are impartial or faithful? Now, therefore, values are there, but the difficulty is that when they are this observed. Now, what is scenario? Let us talk, it will be take a long time, but let us take the three organs of the state. We are governed by three organs of the state: executive, legislature, and judiciary. Now, we are three organs because they rule us. Now, the scenario, what is the scenario? Parliament. Parliament, the one thing also very clear that we are told that our constitution is based primarily on the structure of 1935 Act, Government of India Act 1935. But this act was never in operation. It never applied. It was never made applicable. But it was a basis ultimately for the framers of the constitution. Now, this scenario is that legislative parliament. Legislature means in India we have state legislatures and at the center we call it parliament. Legislature includes parliament also. Now, there is, in England, the emergence of parliament. We followed, our system is the parliamentary system. We had the choice to have, at that time, there are even today, forget about the dictatorial system, and there are also presidential system virtually. For example, China, there is a president. Now, in United States, that was the presidential system, and in UK, parliamentary system. We have followed the British parliamentary system, and the emergence of parliament in England is very checkered one. It doesn't emerge as we have, our parliament is based, comes out from the constitution. Constitution provides there shall be a parliament consisting of two houses plus president. And similarly in the states, there are some states that have bicameral, two houses with governor. So therefore, in England, it was not so. It emerged after the great struggle by the people. Therefore, they demanded certain privileges, etc. Now, in India, we conferred privileges on our parliamentarians, then they did not evolve. They were given, they were thrust upon them, the privileges. Now, parliament is very sacrosanct place. It is a supreme authority. In fact, under the constitution, if you look to it, because they are directly responsible to the people. Parliament, at least the lower house of the state legislature, as well as Parliament, Lok Sabha, elected by the people periodically. And therefore, they have to account for their deeds, what they did for the 5 years, how in governance of the country, and they go to the people. And then again, they are evaluated there. That is the principle. What actually happens, that is a different thing. Therefore, the principle is that the parliament is, legislature is directly responsible to the people. Executive and legislative, this judiciary are not so accountable. Now, here, the parliament, this discussion in parliament, law is made by discussion. There may be dissension, and ultimately, parliamentary debates.
And for that purpose, certain privileges, certain immunities, certain this special powers have been given to those people when they discuss in parliament. Then they have certain privileges. For example, they will not be arrested. What they speak in the house, that will not be questioned in the court of law, etc. Now, here there is history also. We are not going to detail because these privileges emerged in England after great struggle. In India, it was given to them merely by election. Once a person becomes a member of parliament, state legislature or Lok Sabha or Rajya Sabha, he is entitled to all these privileges without any sacrifice as such. The purpose of privileges is to facilitate their functioning in the house. But what is happening gradually? The behavior, because when we were students of law, long back in 1960s, then people, we were told that use parliamentary language, have parliamentary behavior. But if to say today you look to the behavior of the parliament, who they are members of the parliament, then nobody will say that you follow their uh, conduct, because there is what is happening in the legislatures in the parliament. Then the law is made by discussions, and this is the question of 51-49 by discussion by majority. Now, but at the same time, the discussion takes place and the views of the minority is also considered. If they are constructive, they were accepted. But today, because when we are students, even courts refer to the parliamentary debates. The debates are gone. What is the standard of debate? There is no debate. Most of the laws are passed, and how many persons are there in parliament to discuss? Because a law is passed by, it is not that you go and just elect it. But what is actually happening today, it is the executive in the draft the law, the party in power gives the direction, ultimately it is adopted because there is no discussion. Always, whenever any law is introduced and there is a problem in the house, how to conduct it, how to pass it. Therefore, that is about this progressive deterioration in the process of legislation, both at center and the states. Now, the people, they are the representatives of the people, this general public. Now, they should have certain, because they are the indicator of the this social conduct. But there are the crime and corruption are very common with the most of the members, and this they are all recorded. And in certain cases, what happens? Even a person who against whom there is this first informed report in the this police station, if he is selected for the government job, then it will come in the way that all right, there is a report against him. But in case of our legislators, even if they are convicted now, they can still, they are fighting, they are this contesting election from the jails or on criminal charges. So therefore, this deterioration and constitutional values cannot be realized until and unless the instrument, that is the people who form the institutions, are above the mark. Now, even the conduct is so bad. Presiding officer like this Chatterjee, the Speaker of Lok Sabha, and Dr. H.T. Sharma, he was chairman of Rajya Sabha. He wept in the house because of the conduct of the members. Now, upper house is the senior house. It is there. It is supposed to be more sober, but the conduct was so difficult that he wept in the house. That was on record. So therefore, the position of this values by elected representatives, they are at the time very low. Therefore, the values are there, but the values will be realized only by the persons. Now, take the example of executive. Executive runs amok all the powers, virtually the entire
At the moment the legislature not working, and therefore the executive takes the role. And technically, the executive, that is the council of ministers. The executive means the ministers, they constitute the executive. The council of ministers is collectively responsible to the Lok Sabha or to the state legislature. Well, that is their responsibility to the house. But hardly what happens? The chief minister or the prime minister or the minister, who are the persons who form the executive, they are the leaders of the ruling party. Conservative party may be in power, and therefore actually they control the legislature. They are the majority of the majority party, not the legislature. This is just the reverse. And therefore, most of the cases you must be knowing, there is the case in Bihar. Ordinance making power is given to the executive because the emergency is there, and parliament or the legislature cannot sit in, there cannot be discussion, there cannot be law. But the immediate need is there, therefore the power is given to make law even by through ordinances. But there are certain limitations. In Bihar, the ordinance was made, it was this expired, then again remade, etc. all the time. So therefore, executive, what about in emergency? Emergency was imposed by the executive. And the legislature was virtually followed what the executive wanted. Therefore, technically, the government is accountable to the legislature, but practically it is the government which controls the legislature. So that is again a very unfortunate thing happened not in India, it was in England. Therefore, it depends on the wisdom of the house, what type of part the leaders are forming the government. Now come to judiciary. The judiciary wields enormous power. Number one, I think our the judiciary in India is most, our Supreme Court is the most powerful institution in the world. Forget about United States or United Kingdom. United Kingdom also now they have a Supreme Court in 2005. Supreme Court of United Kingdom Act was passed, and therefore they have 11 persons in Supreme Court. They have 11 judges. The chief justice known as president. In our case, Supreme Judiciary has been given wide power because there are we have a uniform judiciary, that is district court known as subordinate judiciary. Although this present chief justice has said don't call them subordinate, but the constitution uses term subordinate judiciary, which culminates at the district level, district judge. Then there is High Court and Supreme Court. These are the constitutional courts. Constitutional courts mean they have the power to interpret the constitution. If a state high court, say, for example, declares a particular act of parliament as unconstitutional, written to it, then it is binding on all until unless it is reversed by the Supreme Court. And therefore, they have the power, this High Court and Supreme Court, they have power to declare the law made by Parliament or state legislature as unconstitutional. Then they have wide powers, for example, for enforcement of the rights, fundamental rights, etc. of the people. Then they have, a civil jurisdiction, criminal matters, and then the government is this president can seek opinion on certain matter. They have done it in number of cases. Then they have, besides civil, criminal, constitutional jurisdiction, the special jurisdiction under Article 142. That's such a wild power. Now, these powers are used by whom? How many persons can avail the remedy of Article 142? Only a few persons. That is, the justice can be purchased. If you have the power to purchase it, then only you can do it. Now, you might be knowing that there are, unfortunately, there are, I think, more than about 70,000 cases pending in the Supreme Court now. In the United States of America,
their constitution is more than 200 years old. And it has been amended only up to, I think, 27 times. One amendment was for abolition of this prohibition, then again they repealed it. Now, one amendment, this last amendment was ratified. It took 200 years. Then it came into existence. In India, we have 106 amendments. Whenever the government feels inconvenient, amend the constitution. Whenever party power, because this power game is there, they amend the constitution. Now it is so difficult that every time amendment of the constitution has become so easy. So the amendment of the constitution, this power to amend the constitution was then restricted by the Supreme Court by invoking the doctrine of basic structure. Now, this basic structure has, in fact, become what Professor Upen Bakshi, one of the jurists of our times, he says the court has taken, it is co-constituent power. Supreme Court has now assumed the co-constituent power, constituent power to constitute it. That is, they have to rely their amendment. You might be knowing that the judiciary, in our case, they say that if you have power, you have responsibility, you must be accountable for it. Accountability and responsibility go together. But in case of Supreme Court, unfortunately, now it happens that there is no accountability in this sense. For example, because after all, there are thousands of high court judges, and uh, this American Supreme Court consists of 9 judges. Even today, there are 9 judges only. And we have now 34 justices. Now, difficulty this in case is that you in cases so many judges are appointed, but here the pendency even remains today. Why? Because a few persons, our court is busy in bail matters of those persons, either of this all the politicians. They are in jail, therefore, for bail applications. Who can go for the court? The person who can pay for it. So, therefore, the criminal and civil cases, most of the cases are pending. The Supreme Court website also lists about 70,000 cases are pending. Therefore, the basic the purpose of dispensation of justice has been restricted by a few people. One judge of the Supreme Court said this who can get justice from the apex court? The person who has capacity to hire the best mouth. How persons in India can hire the best mouth to reach the Supreme Court? Therefore, that is this dispensation of justice is the basic function of the judiciary. Now, judiciary has been, in fact, there are cases pending. If the cases are pending in the Supreme Court and the High Court, then district courts are there. There are courts, I think more than 300 courts cases are pending in lower courts. So, therefore, this concept of delivering justice to the masses, to the people, also remains the will of the wish. Now, how to restore constitutional values? Because the values are there, the constitution is there, the preamble is there, the institutions are there. Therefore, these can be restored only by the cumulative effect of the people. Because one gets the government he deserves. You get the government you deserve. Therefore, it is not, you just take it should not be a blame game. But in fact, every institution should into it. In our all the 3 institutions at the moment, they are not working according to the expected values of the framers of the Constitution. Let us hope the time will come when every institution will realize. So, thank you very much for giving me this opportunity. Thank you, sir. Thank you so much, sir. I want to express my sincere thanks for the enlightening lecture on constitutional values and fundamental principles. Sir, your analogy of the constitution being likened to food
provide a profound perspective on its essential role in nourishing a nation. And your this meticulous breakdown of the functions of the executive, legislature, and judiciary shed light on the intricacies of our constitutional framework. And when you draw that comparison of UK and US, it actually added a global dimension. It has enhanced our understanding of diverse constitutional systems. So thank you so much, sir, for imparting such invaluable knowledge and fostering a deeper appreciation for the backbone of our democracy. Now I would request feel privileged to introduce our next speaker for today, Professor SD Sharma sir, my mentor, my guide, my teacher of law. And he is a distinguished legal scholar with a rich and varied career. He has been recognized with the President's Award in Legal Research in May 2017. Presently, Director, Rafael University, Rajasthan. Formerly, the head of the Department of Law at Assam University, Silchar, and the Dean of Faculty of Law, SSJ University, Almora. Sir has held significant academic positions with a career spanning several renowned institutions, including BBAU, Central University, Lucknow, Dr. Rajendra Prasad Law Institute at Kumaun University, Nainital, and Chanakya National Law University, Patna. Professor Sharma has made substantial contributions to legal education. His administrative roles include serving as the officiating registrar at BBAU and finance officer in charge at BBAU Central University, Lucknow. Professor Sharma's commitment to legal research is evident through his extensive publication record, including 6 books, 75 research papers. And it is noteworthy that among his publications are works on jurisprudence, human rights, criminal procedure code, right to information, terrorism, and human rights. So, recognized for his excellence, Professor Sharma has received various accolades such as Vivekananda Ratna Award and the President Award in Research. He is a life member of prestigious legal organizations, including the Indian Society of International Law and Indian Law Institute. Apart from his academic pursuits, Professor Sharma has actively engaged in social work and has been acknowledged for his exemplary services through awards like the Dev Bhumi Gaurav Award. His commitment to disseminating legal knowledge in reflected, and it is always reflected in his lectures delivered to various ordinances that includes judicial officers, refresher course participants, and law teachers. Overall, Professor Sharma stands as a beacon in the field of legal education and research. Now it's an honor to have you here, sir, as a guest speaker at this webinar. And we need your valuable insights on today's current theme, that is constitutional values and fundamental principles. And I hope the participants would be enriched with this lecture. Thank you so much, sir. So please welcome. थैंक यू दीपाक्षी। सर्वप्रथम मैं अपने परम आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर जोशी साहब को, जिनके आशीर्वादन वचनों से हम लोग प्रफुल्लित हुए हैं, फले हैं, कार्य कर रहे हैं समाज में, चाहे मेरे मित्र ललित तिवारी जी हों या मैं हूं, तो हम लोगों का एक प्रयास रहता है कि समाज में कुछ कार्य किया जाए। यही प्रवृत्ति मैंने तिवारी साहब की देखी, तो सर मैं आपको प्रणाम करता हूं। क्योंकि मेरे मित्र, वास्तव में मित्र, क्योंकि उन्होंने मुझे कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटी दी डीएसबी के टीचर्स को भी एड्रेस करने की। उन्होंने आईपीआर डे मनाया था, मुझे याद है 14 अप्रैल को मैं मुख्य वक्ता था डीएसबी में। पीआर कौशल उस समय डायरेक्टर हुआ करते थे। तो वो उनके अंदर ये शक्ति है कि वो व्यक्ति को पहचानते हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से तिवारी साहब से भी नमस्कार करता हूं। हमारे विश्वविद्यालय के सम्मानित प्राध्यापक डॉक्टर गीता तिवारी जी, नीता बोरा शर्मा तिवारी जी ने उनका भी नाम लिया,
संभवतः वो भी जुड़ी हुई हैं इसके साथ ऑडियंस में, समय समय पर अनेक कार्यक्रमों को आयोजित करती हैं और जो स्पिरिट थी माननीय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी की, उनको आगे बढ़ाती हैं। तो मैं नीता बोरा शर्मा जी को भी इस मंच के माध्यम से नमस्कार करता हूं। ये स्वाभाविक है कि हमारा कार्यक्रम बच्चों के लिए है। एंड बाय एंटरिंग इनटू द टॉपिक, the most stakeholders of today's webinar is the student of Kumaun University, including other universities. Therefore, first of all, I will focus on this Constitutional Day. And this is the information for the student of Kumaun University especially. There is one website. Student get this certificate issued by the UGC, that is redpreamble.nic.in. They will get the certificate from this website by reading the preamble of the Constitution. This is the information for the student, number one. Number two, there is, because this is the program of the Ministry of Higher Education of Government of India, circulated by the UGC, University Grant Commission. And therefore, the another side for the student is the constitutionalquiz.nic.in. They can also download the certificate by participating in the quiz program as organized by the Government of India. Thirdly, no doubt, my friend, learned teacher of the Kumaun University, Professor Lalit Tiwari, highlighted on the historical aspect of the Constitution of India. But one thing I would like to add in the submission of my learned friend, Mr. Tiwari, that there was no doubt, as he has rightly pointed out, that the National Law Day was being celebrated earlier before the 2015. And one question, because the object of this day is to enhance the knowledge of the students. Therefore, some knowledge is available in the website, no doubt. But at the same time, if the teacher will say different from the knowledge which is existing in the various website, authentic website, the student can focus on it, and the student's attention and the knowledge certainly will enhance. Therefore, there was an occasion in 2015, and the Honorable Prime Minister Modi Sahab has inaugurated one program which was related to the birthday of the Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. And there was the foundation stone in a statue or in a place in Bombay. And he declared on that day that it will be celebrated from today. Today means 2015. And that was the day of 11th October. The 26th November shall be celebrated as a constitutional day. And this is the first step which was initiated by our Honorable Prime Minister to convert it from the National Law Day to the Constitutional Day. And it is called the Samvidhan Divas. And the name he was given the Samvidhan Divas. What was the purpose of this day? The first question is that what was the purpose when the Honorable Prime Minister declared it as a Samvidhan Divas? What was the purpose at that time? He said that although this is written under the fundamental duties, as rightly pointed out by Dipakshi also, this is the most important part of as a values of the Constitution. There are the 11 duties. I will not enter on all the duties. But he said that on that day, in future, the awareness, knowledge, sincerity, attention, and devotion should be disseminated among the students. Therefore, if it shall be celebrated as a Samvidhan Divas, it will be the program for the student.
I have seen that now 62 students are on the platform, today's platform, which is organized by the Dr. Rajendra Prasad Law Institute, Kumaun University, under the guidance of Dr. Lalit Tiwari. They are getting the benefit about the awareness, knowledge, and the activeness and devotion towards the Constitution. Therefore, the purpose of this day is to enhance the knowledge of the student. This is very essential. Thus, the Ministry of India circulated the circular in the center university. Most of the university, it may be received by the Kumaun University also, but the region may be this way or that way. I will not enter into that part. Therefore, it is a sincere information to all the students of the Kumaun University. Please visit the website of this website, readpreamble.nic.in, and read that preamble and then get down the certificate. And this is also the essential advice to the head of the Dr. Rajendra Prasad Law Institute, Nainital, so that the university student will get the benefit of this day, and whenever and wherever they will go in future, they will show under the umbrella of the Kumaun University that we have participated in the national program. This is the beneficial aspect for our stakeholders. This is another reason. Then, of course, I will highlight some latest issues relating to the constitutional democratic morality. Values, of course, at the time of framing the constitution, sir, this issue was also debated in the constitution making. Very interestingly, if you will see, very interesting history is there, which students should know about it. When it was written by hand by one of the artists, very interestingly, name was Prem Bihari Narayan Rajada. And he was the artist, sir. And he took the 6 months to write the Indian Constitution by hand. But one condition was there, very interestingly, that so that the student may develop their honest character. This is my point. That condition was that he said that Prem Bihari Narayan Rajada said that I will not take the single penny for writing the constitutional law for the Indian future generation. He was not taken, sir, the single penny. And the weight of this constitution was 3.7 kilogram. It is very interesting. And so that the student should aware about it. Second point, relating to the constitutional ideology and ideal system, ideal habit of the constitution makers. That was Nandalal Bose, who gave the border of the constitution, original constitution. And he was also the artist. He said that I will give the border of the constitution, very interestingly, but I will not accept the single penny. They have totally devoted the 18 hours per day to write the constitution, to give the border to the constitution in italic words. This is the value of the constitution, which starts from the very beginning, sir. So therefore, the one most important aspect is very essential, which students should know, because this is the program of UGC, as notified by the government of India, that one constitution was written by, very interestingly, the Sriman Narayan Agrawal in 1946. Everyone is aware that the Gandhi's philosophy was totally different from the present constitution which is in our hand. And Gandhi was not totally agreed with the constitutional system which has written, because he has called various persons or various constituent members when he was alive up to the 1948. And Maulana, he called the Maulana, Abdul Kalam Maulana, he was the education minister at that time. Which policy you will develop in future under the constitution?
because in constitutional provisions, education word is there, and its national important center universities names are also there. And he called to this education minister at that time and asked to him, what is your policy to make the education policy for the future generation of this country? He was very much interested to give some provisions in the constitution so that the ancient values should be preserved in the constitution by making the constitutional provision. Therefore, this step was taken by the Sriman Narayan Agrawal and written the one constitution known as Gandhian Constitution of Free India. And the introduction of this constitution has written by Gandhiji himself. He has written. And when he was in train, very interesting illustrations are there. Student 76, now the students are 76. Because our program means a program of the Kumaun University. We are born and brought up in the Kumaun University. Our alma mater is Kumaun University. And we have learned much about the education system under the guidance of Professor K.C. Joshi Saab, with the help of Tiwari and other friends also. So then there was the point that in the Sriman Narayan Agrawal, the Gandhiji only written the introduction. And he was on train. That was the day of the 30th November 1945. Because why I am citing these illustrations as a value of the constitution? Because if we will see the fundamental right, in the first duty, not right. First duty, it is written that we are abide by the constitution and respect the ideas of the constitution and the institution, national flag, national anthem. But the second duty says that to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom. This is the second duty. And latestly, the government of India issued one notification. That notification is not the part of what the student will do, but that is the mandate for the teachers, sir. Teachers of the higher education especially, because they have greater duty rather than the duty of the other teachers. And in that notification, the government has issued the notification that the every word of the preamble, 85 words are there, without full stop and comma. There is no full stop. It is very interesting. And 7-8 days, I'm not entering that part. The debate was in Constituent Assembly. Professor Joshi Saab rightly pointed out the draft of this preamble is the Pandit Nehru. No doubt, except the preamble, the whole constitution drafted by Rao. The point is that what is that notification of the government of India? That it shall be written and pasted in the wall of every classroom. This is the fruitfulness of the constitutional day. Every classroom. And in Center University, immediately Tiwari Saab, Center Universities are bound to follow the notification of the government of India immediately, sir. In every classroom, there should be, because of the duty number 2. This is the value of the constitution, so that our student should be dedicated, should respect by habit of our constitution. And very interestingly, sir, I am showing the original constitution. And you can visit the website also with the photograph of Honorable Prime Minister. Latestly, it was
issued in the same form by the government of India in a original form for the public and for the students. And I have seen, sir, very interestingly, what was the value? One of the member from the Almora, the signature is here, sir. The Har Gobind Panth Almora, it is written, sir. In the constitution, it is written that the name of the Uttarakhand, here in my finger, the Har Gobind Panth from Almora. Though all the signatures are here in original constitution. And it is available for the students, not in market, but in parliament. When I was in Delhi latestly, I went there and requested to give me this copy also. So therefore, from where the student can take the lesson or can inspire for the constitution, this is the point. And the point is that because today's day is not the day only for law student. It is a day for the students, because an object of this constitutional day, when it has declared by our honorable dynamic Prime Minister Modi Sahab, said that this day shall be celebrated in the universities, but there will not be any holiday as a national program. For inspiring the students, perhaps the Tiwari ji will take the step by downloading the notification to paste the every word of the preamble of the constitution in every, and the university will get the benefit at the time of the next visit also, Sir Tiwari sir. They will get the benefit because we as a member in the NEC team has seen that the real stakeholder is the student. Whether student and another thing, which is as a value. Today in the Hindu, sir, in Hindu, as rightly pointed out by the Guruji, about the constitutional wisdom, problem, solution, and the proper path to follow it. Today, there, no doubt, there was the crisis and the burning crisis. As sir has said that legislative assemblies, parliament, British, American, of course. But in India, what crisis our legislatures are facing where there? Constitutional morality world emerged in 2014, sir, when there was a first conflict in the Delhi relating to the lieutenant governor and the AAP government. And court said that, no doubt, the Ambedkar also debated this issue in the Constituent Assembly. And Pandit Nehru also gave the observation what kind of the constitution will work in future. They were the visionary person. They said about it. But my point is that in today's Supreme Court judgment about the constitutional democratic morality, the word is, there are three words. The constitutional democratic morality, this is available in the website also. The observation of the Chief Justice of India, Honorable D.Y. Chandrachud, he quoted the book of the Stuart Mill. And Stuart Mill is the pioneer of democracy and written a book on liberty and said about the conflict in between the state and the union. That conflict is related to the withhold the bill by the governor, sir. It is a common understanding.
It's not technical. The common understanding, everyone is well aware about the role of the governor. Because as Guruji rightly said, there was a debate that the governor in India should be elected or nominated. Application of doctrine of pleasure. Of course, this is the aspect, the technical aspect. But it is for all the students. So finally, it has decided that it shall be nominated. And once he shall be nominated or she shall be nominated, automatically she and he will be, it will not be proper word to say the agent, it will be proper to say the nominee of the union government. Nominee of the union government. Suppose a teacher will be the nominee of the vice chancellor, then certainly, indirectly, it can be said that he and she will be in favor of the vice chancellor because of the doctrine of pleasure of the vice chancellor. The point is that, very interestingly said, point is that the bills are being withheld. Then what is the constitutional morality? Where is the value? Where it is the pillar and foundation and fundamental principle to enact the law by the legislature. The duty is that there. The constitution makers has very categorically given the subject matter both. Very in easy language, that the governor and the president is the part of the legislature, either it may be called parliament, state legislature, whatever the nomenclature can be given. In other countries, other names are there. The point is that as a teacher, the governor is the nominee, president is the elected. And the electoral role of the president is categorically defined in the constitution. That is another point, that the who will be in majority, whose MLAs are will be there, whose members of parliament shall be there. That is another practical aspect. It may be in some point of time maybe belongs to the ruling party, some point of time it belongs to the opposition party for certain period, not within the the state so far the concern. So Supreme Court constitutional democratic morality laid down that the governor cannot withhold the bills. It is a case of Punjab. Earlier, it was a case of the Kerala. And it is, of course, there is 200, 201, 168, everything is there, technically. But the word is written under the constitution withheld. And I am quoting the J.L. Nehru, what he said about the constitutional morality at that time. उन्होंने साफ शब्दों में कहा, what he said, whatever the constitution shall be beautiful. बहुत सुंदर बना देते हैं हम. If the Professor Joshi Sahab also quoted this quotation in his various writings, if the people of the India shall not follow the constitution, its beauty shall not work and shall not be converted into the practice. Constitution बहुत अच्छा है, borrowed किया. Yesterday I was searching the procedure established by जो आत्मा है, आलू की सब्जी की तरह काम करती है यहाँ वैल्यू को बनाने में. उसको टेक्निकली 21 पैराग्राफ 21 कहते हैं हम. तो जापान से ले लिया, जापान चले गए और भेज दिया बीएन राव को अमेरिका. कहा तू वहां पूछ के ला कि अमेरिका के संविधान की हम इस स्पिरिट को यहां रखें कि नहीं रखें, हमें क्या परेशानी आएगी. कितनी मेहनत की. What is the idea and ideal principles of the constitution? तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपके withheld में, the withheld power of the governor to the bill, there is a proviso. Proviso कहते हैं तिवारी साहब कि एक एक्सेप्शन नीचे एक पैराग्राफ होता है, और वो पैराग्राफ इसलिए होता है कि कोई ऊपर की बात लागू न हो तो इसको लागू कर लेना, समस्या आ जाएगी. तो वो प्रोविजो कह रहा है, दैट प्रोविजो सेज दैट द
नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ, उसकी व्याख्या नहीं है विथहेल्ड की, लेकिन इनडायरेक्टली इट कवर्स द विथहेल्ड। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, बहुत अच्छा मुझे लगा। आई वाज डिस्कसिंग दिस इशू विथ माय वाइफ टुमारो, कि उसने कहा इट इंक्लूड्स द टू रिटर्न द बिल टू द हाउस। आप या तो प्रेसिडेंट को भेजिए, मॉरलिटी, लेजिस्लेचर मॉरलिटी, विच इज द फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। सर क्या काम है और डेमोक्रेसी का? डेमोक्रेसी, व्हाट इज द डेमोक्रेसी अदरवाइज? मैंडेट वाज गिवन बाय द पीपल सर, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इट इज डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया। डिबेट हुई थी इसकी, एंड फाइनली अंबेडकर गेव द वर्डिक्ट कि इट विल बी डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमने आपको बनाया, आपने हमसे वायदा किया, मैनिफेस्टो दिया, आपने कहा हम ये काम करेंगे, आप लेजिस्लेचर विधायक के रूप में वहां चले गए, उस मैनिफेस्टो को पूरा कर रहे हैं अब तो, लेकिन एक व्यक्ति उसको रोक दे रहा है। तो हाउ इट कैन बी सेड दैट इट इज ए आइडियल डेमोक्रेसी एंड वैल्यूएबल डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी? Democracy according to the constitution. If any word is missed in the constitution, has not been given, तिवारी जी ने कहा कितना लंबा समय इसमें लगा, सालों लगे, महीने लगे, बैठकें हुई और सब कमेटीज बनाई गई। यदि कोई शब्द छूट गया है तो स्पिरिट को ही भूल जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन की हम। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है विदहोल्ड का मतलब डजंट मीन्स यू कैन कीप दिस बिल इन योर पॉकेट, यू हैव नो राइट। Either return, either give the assent or return to the house, दूसरी बात, और refer it to the president of India, आप वहां भेज दीजिए। लेकिन उसमें कंडीशन है, they cannot send it with चालाकी देखी, constitutional value, there is a condition, वो सब परिस्थितियों में नहीं भेजा जा सकता है। If that will affect the power of the courts and especially high court, it is written in the constitution, वो जानते थे ऐसा हो जाएगा। They were very, very visionary person. Even if the Nehru had made the comments in the wiseness of the Ambedkar, because he was the chairman of the draft committee, उत्तर देते थे वो, इसलिए नहीं लोग संतुष्ट हो जाते थे सर कि ये बहुत बढ़िया लॉयर है, इसलिए संतुष्ट होते थे कि रीजन देते थे और लोगों के दिमाग में बात बैठ जाती थी, ये अच्छा बन गया, इससे समस्या नहीं आएगी। तो point is that I will not take much time, some illustration, but various illustrations are there. अभी एक और प्रॉब्लम, there is new problem relating to the technology. सर तो कहेंगे टेक्नोलॉजी को तू कहां कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित कर रहा है? सर, we are living in the technological era and the rights comes from the constitution. 2023 को अगर आप देखेंगे, 2023 में एक यूनिक लॉ बनाया पार्लियामेंट ने, डिजिटल प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट इज देयर, 2013 सर, बट दिस इज द पार्ट ऑफ 23, उसके सेक्शन 6 and 7, आई एम गोइंग ऑन द पैराग्राफ 6 and 7, whether it violates any provision of the various questions are there sir. So far the morality, democratic constitutional morality, which emerged latestly and debated in the Constituent Assembly, have various facets. But one thing which is very relevant for the students, that to respect the Constitution, to follow the Constitution, to abide by the Constitution, to know the Constitution, and to worship the Constitution even if we are in democracy. And the source of the democracy is the Constitution, sir. The persons who will come and they will go, but Constitution of India will remain. If the Constitution of India will remain, the democracy, the largest democracy in the world, sir, it will be strengthened, it will become the strong. And if democracy will become the strong, the every citizen of India will become the strong. Very ideal principle, employment guarantee used. 41.
देयर आर द वैल्यूज। कितनी बड़ी डिबेट हुई थी तिवारी साहब उस समय, सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक कमेटी बना दिया। राजेंद्र प्रसाद जी ऐसे स्थान से आते थे जहां पर भूखमरी थी, और भी लोग थे, तो उन्होंने कहा सर भविष्य में हम लागू नहीं कर पाएंगे इसे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। 33 करोड़ आबादी थी, देश में पैसे की कमी थी। एक एक संविधान के एक एक लाइन को उसको अगर आप देखेंगे, लिखा हुआ है कि ये कोशिश की जाएगी जब कंडीशन है हमारी अच्छी हो जाएगी। ऐसा सुंदर वैल्यू है हमारे। और राधा कृष्णन ने ही सेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट दैट आवर कंट्री इज ए पुअर कंट्री एंड द पॉवर्टी इज प्रिवेलिंग एट प्रेजेंट इन इंडिया। उन्होंने कहा, लेकिन अभी सर ने कहा था करप्शन, ये विजनरी लोगों ने उस समय कहा था, राधा कृष्णन ने इस बात को कहा था कि करप्शन यदि भारत में रहेगा तो भारत की वास्तविक लोकतंत्र को खतरा होता रहेगा हमेशा, क्योंकि हम गरीब देश के रहने वाले हैं, हमारे पास संसाधन नहीं है। तो देयर इज जी के.एम. कामत, वी विल सी very interesting statement he was given in the constitution constituent assembly, no doubt. धर्मे रक्षते रक्षता, ये शब्द कहा उसने at the time of framing the right to religion पे। and the point is that कि मैं एंड करता हूं अपने प्रवचन को कुछ ही इलस्ट्रेशन देने के बाद, वो है कि यदि देश में लोकतंत्र रहेगा तो सब कुछ रहेगा। द्वितीय विश्व युद्ध में वेरी इंटरेस्टिंग, जो बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायक होगा ये स्टेटमेंट, इसको कहे बिना मैं बंद नहीं करूंगा। जब नाजी इंग्लैंड की तरफ प्रवेश कर रहे थे तो वहां के प्रधानमंत्री चर्चिल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूं, ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के चीफ को एक लेटर लिखा। क्या है लोकतंत्र, क्या है वैल्यू, ये बताना चाह रहा हूं मैं। एक लेटर लिखा कि आप न्याय करना सुनिश्चित करें। चीफ जस्टिस को भी लगा कि ऐसा क्यों कह रहा है जबकि दुश्मन हमारे देश में आमंत्रित आ रहे। उन्होंने लिखा उत्तर में कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या ऐसा कारण है जबकि विश्व युद्ध में हम तल्लीन हैं और हम हार रहे हैं। हार रहे हैं शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया, कहा कि देश में हमारे दुश्मन प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या उत्तर दिया चर्चिल ने, देखिए वेरी मार्मिक। विद्वान थे ये, बड़ा अध्ययन थे। इतिहास इसलिए नहीं होता है हम उसको रिपीट करें बच्चों, इतिहास इसलिए होता है कि हम उससे शिक्षा लें, हम गलत को न होने दें, सही के लिए प्रेरणा लें। तो चर्चिल ने उत्तर दिया कि यदि न्यायपालिका न्याय करना सुनिश्चित करेगी तो देश के लोग भूखे रह के भी विश्व युद्ध में भाग लेंगे। अब देखिए भारत के संविधान के डी को 51 जो ड्यूटीज है तिवारी साहब, जिसको लिखने के लिए आदेश हो रहे हैं, डी में देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस लिखा है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। बच्चों, मूल कर्तव्य के कर्तव्य संख्या 4 में लिखा हुआ है। कौन सा वो उद्गार देखिए कहां से आए। हालांकि सर कहेंगे तो 1976 से आए, एग्री, बट एज ए टीचर इट इज माय ड्यूटी टू कोरिलेट इट। जब अभी हम वेंकटरमणी को कल सुन रहे थे, अटॉर्नी जनरल को, वो एक कार्यक्रम में 26 नवंबर के आए हुए थे, तो वो कोरिलेट कर रहे थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इक्वल टू द सुप्रीम कोर्ट जज, उससे भी ज्यादा। उसको 34 न्यायाधीशों को देखना है और न्यायाधीश को अकेले क्लाइंट को देखना है, बहुत बड़ी पोजीशन है। जॉन स्टुअर्ट मिल को कोरिलेट कर रहा था, जॉन रॉल को कोट कर रहा था। तो पॉइंट इज दैट चर्चिल के वो उद्गार भारत के संदर्भ में लोकतंत्र के आदर्शात्मक स्वरूप को मानने के लिए भारत के नागरिकों के लिए, सिटीजन शब्द लिखा है शुरू में, एक मैंडेट है, आज्ञा है कि आपको अगर बुलाया जाएगा आप ये नहीं कह सकते डिफेंस की हमने ट्रेनिंग नहीं ली है। बच्चों, आपको तैयार रहना पड़ेगा देश की सुरक्षा के लिए, आपको देश की बढ़ोतरी के लिए,
वो देश हमारे संविधान से सृजित हुआ देश, आधुनिक देश, जिसमें हम 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट को सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भसीन में, तिवारी साहब, जब जम्मू कश्मीर में कोर्ट ये लगा हुआ था, तुम्हारा इमरजेंसी लगी थी, इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया था, तो अल्टीमेटली संविधान ने कहा दिस इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू गेट द इंटरनेट फैसिलिटी। आज बदल रहा है, वैल्यूज बदल रहे हैं, लेकिन ये दिस वॉज द विजन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। उसी समय हमारे उनके दिमाग में था ऐसा होगा, वो जानते थे कि कोई नई बात नहीं है जो मैं समझ पाया हूं एज ए विद्यार्थी, क्योंकि इतिहास इस चीज को दोहराता है, होता है, दोहराना छोड़ दीजिए, स्वाभाविक है, लेकिन उस स्वाभाविक परिस्थितियों में भी संविधान का अस्तित्व एक नए चमत्कार के रूप में आता है। 18वीं शताब्दी में जब रिवॉल्यूशन हो रहे थे विश्व के सभी देशों में, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उस समय जो सिद्धांत थे वो चमक करके आए, कैसे, जैसे आग में तपते आगे हों। हमारा संविधान के नए सिद्धांत कह तो दिया कि आप लौटाइए इसको, और लौटाने के बाद अगर विधानसभाएं फिर भेजेंगी आपको, तो फिर आप बाउंड हैं दस्तखत करने के लिए। वो इलेक्टेड, अरे बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द कहा, अनइलेक्टेड गवर्नर कहा, क्योंकि वो बहस थी सर, वो बहस थी कि राज्यपाल को चुनाव से हम माने या यहां से माने, कहा अनइलेक्टेड गवर्नर, इलेक्टेड गवर्नमेंट, एनी मैनिफेस्टो, ओपिनियन ऑफ द पीपल, मैंडेट फ्रॉम द पीपल, कॉमन बात है संविधान, मैंडेट फ्रॉम द पीपल, तो हम पूरा करेंगे। और वही तो अम्बेडकर कहते थे, नहीं पूरा करोगे दोबारा नहीं निर्वाचित हो पाओगे। उन्होंने उस समय जब ये नॉन जस्टिसिएबल बात आई कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कुछ वेलफेयर की चीजें करना चाहते हैं, तो उस समय कहा कि भैया इसको नॉन जस्टिफिएबल, फिर डिबेट होगी, भैया इसकी उपयोगिता क्या रहेगी। उन्होंने कहा ये आएंगे ही नहीं दोबारा निर्वाचित हो गए, यहाँ ये बाहर ही रह जाएंगे। तो इनकी मान्यता न होने के बावजूद भी सर, इनडायरेक्टली इफ द पब्लिक विल रिकॉग्नाइज, and recognition of the public is the supreme, that's why we the people of India to give it ourselves, बीच का डॉट डॉट है। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, सर ने भी रिपीट किया, तिवारी साहब ने रिपीट किया, वो दिवस ही है कि हमें आज उसकी शपथ लेनी है, प्रत्येक नागरिक को शपथ लेनी है। इस माध्यम से हमारे विद्यार्थी भी शपथ लेंगे। इसलिए मुझे कौटिल्य की उन पंक्तियों पर बड़ा गर्व होता है जिसमें वो कहते हैं प्रजा को राजा पर विश्वास करना चाहिए, और राजा को राजधर्म का अनुपालन करना चाहिए, और राजधर्म वर्तमान में जहां लोकतंत्रात्मक संविधान है, वो राजधर्म हमें भारत के संविधान से मिलता है। वहां हम इस पर दृष्टि डालेंगे तो हमें ये होता है कि इससे मिलता है, वो कोई नई बात नहीं है। मैं बात बताना ही भूल गया उसकी, महात्मा गांधी के संविधान में लिखा क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें लिखी है। आज वो 2020 के माध्यम से आ रही हैं भारत में, तो वो इन्हीं चीजों को लिखता है। गांधी ने ये लिखा, इंट्रोडक्शन में लिखा उस संविधान के, कि ये मेरी फिलॉसफी है, और ये दरिद्र नारायण की फिलॉसफी है, संविधान है, और ये लोगों का लोकतंत्र है, और लोगों का लोकतंत्र गांव में निवास करता है। बहुत देर में लाए था, करेंगे आप, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे हो रहा है। तो ये था पंचायत राज प्रपोजल, 22 अध्याय हैं वहां भी सर, बड़ी इंटरेस्टिंगली उसको पढ़ने का मौका मिलता है तो बड़ा आनंद आता है। तो देयरफॉर द कुबेर का जो मैं कहना चाह रहा हूं, जिसको श्रीमन नारायण अग्रवाल वगैरह इन लोगों ने उद्धृत किया है, वो कहता है लास्ट में, इसके बाद मैं विराम दूंगा क्योंकि ये मुझे लगता है कि बच्चों को अच्छा लगा तो वो जुड़ते गए। तो उसमें वो कहता है वृत्तम यत्नेत संरक्षेत वित्तमेति याति च अक्षीणो विततः क्षीणो वृत्त हस्त हतो हता। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप तिवारी साहब जब हमारे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री थे, खंडूरी साहब, उन्होंने ये उद्धरण, कुबेर नीति का 40वां उद्धरण
साइन बोर्ड में लिखवा करके कई जगह लटका दिया था, और रेलवे स्टेशन हरिद्वार में भी लटका था। तो हमें चाहिए, क्योंकि वी आर अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव द ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव द ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, एंड वी आर बाउंड टू डिफेंड आवर कंट्री, एंड नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ वी विल सी दिस रूल ऑफ लॉ, तो हमें चाहिए कि हमें कंडक्ट पे ध्यान देना होगा। पैसा तो आएगा, वित्तम याति अक्षीणो वित्तता चीर्णो वृत्तहस्तु हतो हत। तो हम संविधान के प्रति डेडिकेटेड रहें बच्चों। Therefore, go through the website of the UGC, read the preamble today, and automatically you will get the certificate। उसी में आ जा रहा है, वो तुम्हारा नाम लिख के आ जाएगा बच्चों नीचे। आप उसमें आप केवल अपना मेल डालेंगे, आपका मेल में सर्टिफिकेट आ जा रहा है प्रेम्बल के साथ। वो आप जहां जाएंगे, एक अचीवमेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉ इंस्टीट्यूशन के द्वारा कुमाऊं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए, और जो भी जुड़े हैं, क्योंकि कुछ एलुमनीज भी इसमें जुड़े हुए हैं, हमारे कुमाऊं यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के पूर्व छात्र भी जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जो भी जुड़े हुए हैं, इसके अलावा भी आज का दिवस आपको एक बेहतरीन प्रमाण पत्र प्राप्त करने का है। तुरंत कुछ बच्चों ने हो सकता है उसको लॉग इन भी कर लिया होगा, और उसमें कार्य भी कर रहे होंगे, इंगित कर रहे हैं बच्चे अपनी खुशी जाहिर करके। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः गुरुजी से आशीर्वाद मांगूंगा। तिवारी जी मेरे मित्र हैं, तिवारी जी का सहयोग हम चाहेंगे हमेशा, क्योंकि अभी हमें जिज्ञासा है कि हम अपने जीवन में कुछ करें रिटायरमेंट के बाद भी, एटलीस्ट बच्चों को पढ़ाएं। और कई जगह मैंने घोषणाएं कर दी हैं कि मैं निःशुल्क पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे तो पढ़ाने के लिए चाहिए, तो इसमें भी तिवारी जी सहयोग करेंगे। दीपाक्षी से भी मैंने कहा था एलएलएम के बच्चों को ऑनलाइन तो निःशुल्क पढ़वा ले मेरे से, तो इसलिए तिवारी जी सहयोग करते रहेंगे। दीपाक्षी का अच्छा डिपार्टमेंट बनाइए सर आप। हम लोगों का विचार बहुत अच्छा था, वहां पर हमने 3 ईयर को नहीं खोलने दिया राणा साहब के समय में, और 5 ईयर ऑनर्स कोर्स मैंने प्रारंभ किया, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में कहीं पर नहीं था, क्योंकि मैं देख रहा था इधर उधर। तो आज कुछ स्पेशलाइजेशन चलाने की जरूरत है। मैरीन टाइम पे बात हो रही है, स्पेस लॉ पे बात हो रही है, टेक्नोलॉजी एंड लॉ का स्पेशलाइजेशन हो रहा है। तो हमारे कुमाऊं यूनिवर्सिटी के बच्चे आगे बढ़े, यही हमारी आज के दिन प्रेरणा होनी चाहिए। तो उन बच्चों को अच्छा स्थान मिलेगा तो हमें भी गौरव होगा। धन्यवाद आप सब लोगों को पुनः, और सभी विद्यार्थियों को प्रेम आशीर्वाद, और आप अपना प्रमाण पत्र लें। Thank you so much, sir. I would like to take this opportunity to thank Professor Sharma, sir, for imparting his words of wisdom. Sir, your words have enlightened us, and I extend my sincere gratitude for enlightening lecture on constitutional values and fundamental principles. Your insights into the constitutional democratic morality, particularly Article 21 and its expansion, were truly thought-provoking. The discussion on the significance of emphasis on employment guaranteed under Article 41 resonated with all of us very deeply. And your reference to Sardar Vallabhbhai Patel's vision and commitment to providing employment guarantee to all is quite inspiring for all of us. As we strive to uphold these ideals, the words of visionaries like Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, acknowledging the plight of poor, serve as a poignant reminder of our collective responsibility. Your words throughout your lecture have ignited a fire within us for seeking more knowledge. I would like to thank you again, sir. Thank you very much. Respected dignitaries, faculty members, and all the participants, as we gather here on this pious occasion of Constitution Day, we are privileged to witness a significant ceremony, the oath-taking ceremony, an expression of commitment and reverence towards the guiding principles of our nation. It is an honor to introduce a young and promising individual, Gauravi Joshi, a student from BA LLB 3rd semester, who will be leading us in this preamble oath today. Over to you, Gauravi. Thank you so much, Nishtha. Very good afternoon, one and all. Now I request you all to kindly repeat the oath after me. We, the people of India, We the people of India, having solemnly resolved
and solemnly resolve constitute India constitute India into a sovereign, socialist, secular, secular, democratic democratic republic, republic and to secure and secure to all its citizens all is justice, justice, social, economic, and political social, economic, and political liberty of thought, liberty of expression, expression, belief, belief, faith, faith, and worship, and worship, equality of status equality of status and of opportunity, and opportunity, and to promote among them all and promote among them fraternity, fraternity, assuring the dignity of the individual of the individual and the unity and unity and integrity and integrity of the nation. of the nation. In our Constituent Assembly, In our Constituent Assembly, this 26th day of November, this 26th day of November 1949, 1949, do hereby adopt, hereby adopt, enact, enact, and to give ourselves and give ourselves this Constitution. this Constitution. Thank you so much. Thank you so much, Corby. As we are nearing the end of this wonderful session and wonderful lectures given by two very prominent personalities, I would now request Professor Lalit Tiwari sir to please present a vote of gratitude. थैंक यू निष्ठा। इससे पहले कि मैं सभी का धन्यवाद करूं, प्रोफेसर चंद्रदत्त सूटा जी, निदेशक उच्च शिक्षा, हमारे बीच में हैं। उनसे विनम्र आग्रह करेंगे कि आज के इस अवसर पर दो शब्द कहने की कृपा करेंगे। आदरणीय सूटा जी, प्लीज। वेरी गुड। जी सर, सीटा सर प्लीज। सूटा सर, मेरी आवाज सुन रहे हैं? थैंक यू वेरी मच ललित तिवारी सर जी। और इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मेरे गुरु और मेरे अग्रज प्रोफेसर केसी जोशी सर, प्रोफेसर एसडी शर्मा जी। मैं थोड़ा सा इस कार्यक्रम में थोड़ा लेट आया, इसलिए मैं उनकी पूरी बात नहीं सुन पाया था, लेकिन प्रोफेसर एसडी शर्मा सर को मैंने पूरा सुना। और सभी पार्टिसिपेंट्स, सभी लॉ प्रोफेशनल्स और जो भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रोफेसर ललित तिवारी जी को बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। और अभी मैं प्रोफेसर एसडी शर्मा साहब को सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। वास्तव में ये बहुत ज़रूरी है, और ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट कर करके अपनी पूरी सोसाइटी को समृद्ध करना है। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को हम जाने भी और उसको पढ़ें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट लाइक ए लिविंग ट्री, जिसकी जड़ें ज़रूर हमारे संविधान निर्माताओं ने रख दी हैं, लेकिन देश जैसे जैसे आगे बढ़ता है, प्रोग्रेस करता है, तो एक पेड़ जिस प्रकार से ग्रो करता है उसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन भी ग्रो करता है समय की आवश्यकता के हिसाब से। लेकिन उसकी मूल भावना वही बनी रहती है जिसकी ओर उन्होंने इशारा भी किया। और श्री हरगोविंद पंत जी के द्वारा जो संविधान
में अपना कंट्रीब्यूशन दिया गया था, उस संविधान को मुझे उसको देखने का भी मौका मिला जब मैं नासिक में अंबेडकर भवन में वहाँ पर गया था। वहाँ पर ये रखा हुआ है, इसकी मूल कॉपी रखी हुई है। तो मेरा कहने का यहाँ पर केवल, चूँकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि इतने बड़े डिग्निटरीज के बीच में और लॉ प्रोफेशनल्स के बीच में बहुत कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि हमारी जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को जानना चाहते हैं और आज के संदर्भ में, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे हमारी एग्जीक्यूटिव हो, या फिर हमारी विधायिका हो, लॉ मेकर्स हो, सभी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को जानना और उसे रोज पढ़ना जरूरी है, उसको लगातार पढ़ना जरूरी है। और इसके लिए सभी की लीगल ट्रेनिंग होनी चाहिए। जुडिशरी में तो लीगल ट्रेनिंग होती है, लेकिन जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स में हैं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग इस तरीके से होती है कि हम सीक्रेट चीज़ों को सीक्रेट करना चाहते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट नहीं बनाना चाहते हैं। और हमें ये समझ में नहीं आता कि हम आज जहाँ पर हैं वो पब्लिक के कारण है और पब्लिक के कॉज के कारण है। तो इसलिए जो आज सबसे बड़ी जो कमी हमें महसूस होती है वो हमारे देश में तमाम प्रकार के इश्यूज, डेफिशिएंसीज के बारे में, या जिस चीज़ को हम लैक करते हैं उसके बारे में कहा जाता है, लेकिन जो सबसे विच इज़ द मदर ऑफ ऑल इश्यूज इज़ द लैक ऑफ गवर्नेंस। हम गवर्न नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि और इसके लिए चूँकि हमें संविधान की स्पिरिट को समझना होगा। और मैंने अभी 1-2 दिन पहले हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहब आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि RTI एक्ट जैसे बना है तो ट्रांसपेरेंसी के लिए बना है, लेकिन जो लोग इसका यूज़ कर रहे हैं या तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, या दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो उसके बारे में बहुत ही कम जानते हैं, और उसमें ऐसे लोग भी हैं जो RTI का जवाब देते हैं, और उनके बीच में एक बहुत ज़्यादा नॉलेज डिवाइड है, और इसलिए लोग डरते हैं, जवाब देने में डरते हैं। तो इसलिए अवेकनिंग की आवश्यकता है, और इस नॉलेज डिवाइड को रिड्यूस करने की आवश्यकता है, इसको एलिमिनेट करने की आवश्यकता है। और नॉट ओनली फॉर ऑल द लॉज बट ऑल्सो फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति नॉलेज को बढ़ाना होगा, और 26 जो नवंबर का ये मौका होता है वो हमारे लिए इस जिम्मेदारी को समझने का एक रिव्यू देता है, एक समीक्षा करने का मौका देता है कि हम कहाँ पर कम हैं। देश की आज़ादी को 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन हम इन वर्षों में कितना हम कॉन्स्टिट्यूशन को और ज़्यादा प्रचारित कर पाए हैं और ज़्यादा लोगों के जन जन तक पहुंचा पाए हैं, इसके बारे में अवश्य हमें निश्चित आज ये सोचना पड़ेगा। इस अवसर पर जो ओथ ली गई है, मैंने भी बहुत सीरियसली ओथ ली, जिसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और एक बार पुनः ये जो डिग्निटरीज हमारे आए हैं, जो हमारे कीनोट स्पीकर और मुख्य वक्ता, उनका आभार व्यक्त करते हुए, और तिवारी जी को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई देते हुए, और दीपाक्षी जो मैडम है जो इसका प्रभावी संचालन कर रही हैं, उनको बधाई देते हुए और सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सूटा सर, निदेशक उच्च शिक्षा उत्तराखंड का। और अब मैं सभी का कुमाऊं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद करूंगा। और जो भारत का संविधान, जिसे हम अपनी आत्मा कहें या अपना शरीर कहें, जो उसी के हिसाब से चलता है, और उस पर कुछ जो कविताएं हैं, कुछ कविता अननोन कविताएं कुछ मुझे मिली हैं, मैं आप सबके बीच में रखना चाहूंगा। भारत देश का जो ये संविधान हर भारतवासी का अभिमान, ताकतवर बहुत है यह गणतंत्र, बदल देता है ये राजतंत्र, कमजोर नहीं शक्तिशाली है ये, सत्ता परिवर्तन का सहज यह मंत्र, संविधान देता है सबको हक जीने का अवसर, शासन हेतु 60 महीने का, जनता बिठाती है सर आंखों पर, लेकिन बदले में चाहती है शासन करीने का। इस दिवस पर, जो सर्वोत्तम दिवस है, उस पर समान अधिकार देता है नागरिकों को, खुली हवा खुली आंखों का ये स्वर्ग है, यही है भारत का संविधान। तो मैं कुमाऊं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आदरणीय प्रोफेसर केसी जोशी जी, पूर्व कुलपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनके व्याख्यान से निश्चित रूप से बहुत सारी जानकारी हमको मिली। और आदरणीय प्रोफेसर SD शर्मा जी का
पूर्व डीन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जब उनके व्याख्यान से निकली कि उन्होंने जब कहा कि अग्रवाल साहब का जिक्र किया, उन्होंने रायजादा साहब का जिक्र किया, और उन्होंने अपने जो व्याख्यान था उसमें ये भी कहा कि संविधान जो है एक भोजन की तरह है। तो संविधान अगर हम भोजन नहीं कर, ये हमको निश्चित रूप से लिबर्टी का अधिकार तो देता ही है संविधान, लेकिन अनुशासन का पाठ भी यही संविधान सिखाता है। यही संविधान ने बहुत सारे निर्णय दिए हैं, और उन निर्णयों ने जो हमारे संविधान है उसके स्वरूप को बचाए रखा है। 106 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, और निश्चित रूप से जो उम्र थी पहले ज्यादा उम्र, और फिर बाद में युवाओं को भी वोट देने का अधिकार इसी संविधान के जो अमेंडमेंट्स हैं उनसे मिला। तो ये सरकारें तो बनती है, लेकिन ये संविधान है ही बन जाता है। मैं तो इस बात को भी कहता हूं कि सरकार कौन, आम आदमी सरकार। तो सरकार कौन से निर्णय लेगी वो भी आम आदमी बताएगा, क्योंकि सरकार जब आम आदमी की है तो वही सरकार बनाता है, और वही सरकार का भाग है, वही सरकार है। तो ये भारतीय संविधान की बहुत ही एक लचीला रवैया, और एक भारतीय संविधान का एक हर व्यक्ति के उसको नागरिकता का एहसास कराना भारतीय संविधान की एक बहुत बड़ी खासियत रही है। तो मैं पुनः कुमाऊं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आदरणीय प्रोफेसर केसी जोशी जी का, आदरणीय प्रोफेसर एसडी शर्मा जी का, आदरणीय निदेशक महोदय सीडी सूटा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस कार्यक्रम को करने के लिए राजेंद्र प्रसाद लॉ एकेडमी जो हमारे शुरू की गई है डॉक्टर दीपाक्षी जोशी के नेतृत्व में, वही इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। उन्होंने ही ये प्रयास किया कि इस महत्वपूर्ण दिवस पर हम सब लोगों को एकत्र कर सके। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ ही में जो हमारे साथ हमारे जो मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, उनकी एक लंबी लिस्ट मेरे पास है, उन सभी का धन्यवाद करता हूं। प्रोफेसर नीलू लोधियाल, प्रोफेसर गीता तिवारी जी, डॉक्टर सुरेश पांडे जी, वीके रांजी, डॉक्टर फरजाना आजिम, लवली पवार, एडवोकेट सीमा शर्मा, और हमारे निदेशक प्रोफेसर नीता बोरा शर्मा जी भी हमारे साथ शुरुआत में जुड़ी थी। वो अब हमारे साथ शायद उनका कनेक्शन टूट गया है, वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में रही, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही सभी विद्यार्थियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। अदनान अली से लेकर मैं शुरुआत करता हूँ, चमन राणा, आनंद सिंह, अनुरीता भट्ट, अन्या खान, अरविंद कुमार, दया बिस्ट, दीक्षा चौधरी, और ध्रुव बोरा, दिव्यांशी कौशल, दिव्यांशी पुलारा, दिवाकर जोशी, सुरेश पांडे जी साहब का, रंजन साहब का, गुसाई साहब का, फैजल सलमानी जी का, गणेश नेगी जी, गौरवी जोशी का, गणेन्द्र प्रताप सिंह जी का, हर्षिता रैकवाल का, जितेंद्र कुमार, कैलाश चंद जोशी, कपिल ठाकुर, कविता अग्रवाल, किरण सागर, कुसुम पांडे, लबिया अहमद, और मनीषा बेस्ट, मनोज बेस्ट, मोहम्मद यूनुस, नवम महलोत्रा, निकिता कांडपाल, निष्ठा जोशी, पल्लवी आर्या, प्रतिभा सिलेन, प्रतिभा सिंह, प्रतीक्षा रानी, प्रियांशु आर्या, रमेश जायसवाल, रश्मि भारती, रोशनी सिंह, सचिन वीर सिंह, समची कांडपाल, समीक्षा उप्रेती, संगीता यश, सीमा शर्मा, सैल विश्नोई, शशि प्रभा, शिवांगी, श्रीकांत खत्री, सिद्धांत तिवारी, सुधीर कुमार सिंह, सुरजीत सिंह, स्वास्तिका पंत, तनुजा आर्या, शेख ठाकुर, रुद्र प्रताप सिंह, उबैदुर रहमान, वर्णिका वर्मा, विकास रंजन त्रिपाठी, यशिका करगेती, योगेश विश्वास और योगेश्वरी जैनोला जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और निश्चित रूप से हमारे जो आज के मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि रहे, उन्होंने निश्चित रूप से हमको ज्ञान दिया है इस संविधान की तरफ, और संविधान हमारे जीने का तरीका है, इस जीवन को सरल बनाने का तरीका है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आमंत्रित करूंगा डॉक्टर दीपाक्षी जोशी को कि आज के इस कार्यक्रम की विधिवत रूप से घोषणा करेंगे कि यह समाप्त माननीय अतिथियों की अनुमति से किया जाता है। डॉक्टर दीपाक्षी जोशी प्लीज। से हमारे साथ निभाया है। थैंक यू प्रोफेसर एसडी शर्मा सर, कैलाश चंद जोशी सर, सुट्टा सर ने हमारे साथ जुड़ के हमें जो है गौरवान्वित किया है। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु आर हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।